नमस्कार, मैं अंबिकेश्वर चतुर्वेदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं गौरव श्रीवास्तव जी, जो हैशटैग एनालिटिक्स के को फाउंडर हैं और इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग पे भारत में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि कोविड के दौर में जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या रोल था, हम कहाँ चूक गए और किन किन बीमारियों में जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकती है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रकारिता विभाग में। धन्यवाद अंबिकेश्वर। बहुत भारी सवाल पूछा है आपने। तो कोविड इज एनोमली इन द ग्लोबल हेल्थ पैराडाइम बिकॉज we were never prepared for it. And among the several things that COVID taught us, one of the things that we for sure understood was that we are not prepared, right? And the current day technologies that we have today, the current day patient care that we have today is not sufficient for not just COVID but for several clinical conditions. And any future similar pandemic, the world needs to be much better prepared, right? That's what our learning was. कोविड के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। कोविड को कोविड क्यों बोला गया, उस वहाँ से शुरू करते हैं। क्योंकि सितंबर 2019 अक्टूबर 2019 में जो है फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन इन चाइना वाज ऑलरेडी बीइंग अंडरस्टूड, बट वी डिड नॉट नो व्हाट इट इज़, व्हाट शुड वी एट्रीब्यूट इट टू, राइट। थोड़े दिनों के बाद हमें ये समझ में आया कि ये सार्स है। सार्स जो हम शायद पहले भी देख चुके हैं 2001-2002 के और वायरल, सार्स इज़ अ वायरल, ये so this is a kind of a SARS virus. Only when we did genome sequencing of the patient sample of the virus, we were able to then figure out that this is not just any other virus. It is similar to SARS, but it is actually much ahead of SARS. And hence we went ahead and named this a COVID, the COVID virus. And the large point to understand is, जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद ही हमें मालूम पड़ा है कि ये क्या है, और जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद ही हमें इसको अब आगे टेस्ट कैसे करेंगे उसकी पद्धति का अंदाज़ा हुआ। तो जो दुनिया के सारे RT-PCR किट्स बने, वो सारे के सारे किट्स जो हैं उस जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा जो निकल कर के आया उसी से बना। दुनिया के जितने वैक्सीन्स बने वो सारे जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुए उसका डेटा जो निकल कर के आया उसी से बने। Which basically tells us one thing, that a lot of the future healthcare is going to be driven by our capability of sequencing, finding the sequence of the pathogen, the viruses, the bacteria all around us, all of the infectious agents, getting access to that data and being able to use that data to figure out large scale applications in diagnostics, in treatment, in vaccination. Right, that is the capability of whole genome sequencing. That is the capability of this technology, and my company Haystack Analytics specifically focuses on this technology. Brings whole genome sequencing to infectious diagnostics. We have solutions now in tuberculosis. We have solutions for sepsis, and we actually are considered to be one of the world's leading innovators in infectious genomics today. Yeah. सर, ये जीनोम सीक्वेंसिंग केवल कोविड के लिए है कि और भी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, पहले समझते हैं दो बीमारियां किस स्पेक्ट्रम में होती हैं। एक स्पेक्ट्रम होता है आपको इन्फेक्शियस, जिसमें समथिंग कम फ्रॉम आउटसाइड कम्स, हिट्स आवर बॉडी एंड इन्फेक्ट्स अस। एंड सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल इंटरनल disharmony of our biology which causes some problem, right? Now genome sequencing has a role to play in both the spectrums. जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर, पार्किंसन, all of the leading problems that we see today, these are all that evolve from within our biology, triggered by the lifestyle that we are living, and obviously facilitated if we have the genetic mutations which will enable or which will accelerate these conditions to develop on us. Genome sequencing today is enabling in NCDs for a person to understand what are the key problems that a person can have through his life.
including cancers, including the diabetes, the endocrine problems, cardio problems. Understanding of which problems am I actually prone to, and what kind of a lifestyle choice I need to make so that I am able to take control of my health, and health does not become a surprise. इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपके आपके आप कभी भी डॉक्टर से मिलने जाते हो ना, दैट जेनेटिक्स इज इनग्रेन्ड इन आवर मेडिकल सेटअप, राइट? जस्ट टू एक्सप्लेन दैट बिट, आप किसी डॉक्टर से कभी मिलने जाते हो तो बोलते हो कि मुझे हार्ट की कुछ परेशानी हो रही है, तो वो पूछता है कि आपके घर में कभी अपने फादर का कुछ प्रॉब्लम था क्या, आपकी मदर का कुछ प्रॉब्लम था क्या, ऑन द पेटर्नल साइड एनी वन एल्स हैड अ प्रॉब्लम. व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड अ जेनेटिक लिंकेज टू योर प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द सिम्टम्स दैट यू आर शोकेसिंग टुडे, are they similar to what your ancestors, because you're going to carry the genes from them, already had shown. They also go ahead and ask you another question. आपने कभी, आपको इन चीज़ों से एलर्जी है क्या, आपको ये दवाई से कोई टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम है क्या, हैव यू हैड दीज प्रॉब्लम्स और नॉट, राइट? इवन दीज आर जेनेटिक प्रॉब्लम्स at some level, because we know by just sequencing my DNA as a person, I will be able to find out all of the problems that not just my ancestors had, but I'm carrying for myself. Not only that, I'll also be able to say whether certain spectrum of medicines are going to work on me, they are going to be toxic on me, and obviously on the allergy and nutrition side, whether I'm going to be able to handle certain kind of food at all or not, which then becomes critical in ensuring that we are able to make the right lifestyle choices in taking control of our health. And then comes the entire infectious. The beyond the NCDs, the infectious, where genomics is playing a very, very big role. We in fact expect that in the next 5 years, all of the diagnostics that we do today for infectious screening and then leading to the treatment is going to be significantly disrupted by genomics, and genomics based screening is going to become the mainstream tool with which doctors are going to identify and personalize the therapy of the patient. थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका.